Hello students, today here I am going to explain tense. You read present tense, past tense, future tense. So this is the what is tense, what is meant by tense. So I am going to explain and describe or define tense and its uses, how these three tenses present, past and future are used for what purposes in what sense. Actually students, tense, when we need use of tense, हमें कब जरूरत होती है टेंस के यूज करने की? We need use of tense when we speak, and when we speak we explain, we express our ideas, thoughts in the shape of communication, and for communication we use sentence. You have known, or you are knowing very well that what is sentence. Definition of sentence is a group of words in order having complete sense. यानी सेंटेंस क्या है? तो शब्दों का समूह है, और वह समूह ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज पुट इन सेंटेंस इनटू ऑर्डर। मीन्स वो ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो है वो ऑर्डर में होने चाहिए, ऐसे आता है ऐसे कुछ भी नहीं लिख दिया जाता है, जम्बल्ड नहीं होते हैं, तब सेंस नहीं देते, वो सेंटेंस नहीं होता जम्बल्ड सिचुएशन में अगर वर्ड्स हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर, शब्द होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं। ऑन बीइंग इन ऑर्डर दे गिव दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव कंप्लीट सेंस, वो पूरा अर्थ भी देते हैं, तब वो सेंटेंस कहलाते हैं। मीन्स सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर हैविंग कंप्लीट सेंस। यदि हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑर्डर में तो लिख दिए, लंबा लिख दिए, वी मे राइट, बट if this sentence or those group of words are not giving complete sense, they have half sense, then they are not a group of words, they are not under the definition of sentence, rather than they become either phrase or clause। आधा अधूरा सेंस दे रहे हैं तो या तो क्लॉज होंगे या तो फ्रेज होंगे। Though some clauses give complete sense in itself, then they become sentence, but if sentence become with half sense, then it will become either group of word or clause। if without finite verb those group of words are, then they become phrase, and if finite verb is there in half sense sentence, then that becomes clause। For example, in the morning, in the evening, for the sake of, all these are the group of words, these are the phrase। An old man, an intelligent student, boy, all these are the group of words because these don't have any finite verb। But when we say, when my father returned, word conjunction when is the subordinate conjunction, adverb of time, and when after that my father returned, returned is the finite verb। so when my father returned, जब मेरे पिता लौटे, जब मेरे पिता लौटे, then what? Simple question is arising, so it is clause, not a sentence, having half sense, giving not giving complete sense। this is the group of word and clause। and if we add I saw, this is the main clause, principal clause। I saw when my father returned, I saw मैंने देखा जब मेरे पिता आए वापस लौटे, this is the complete sense sentence। I saw the bird flying in the sky, finite verb is also there, flying in the sky, I saw also the finite verb, flying in the sky, in the sky is the phrase, fly is the again verb। so this is the sentence, complete sense। so
What is sentence? I think you all have got. After sentence, what is group of words, what is phrase, and what is clause also in your mind clear. Now what is relation of sentence with the tense? First thing, whatever I said, whole sentence. For example, you can say I read a book, I will read a book, I am reading a book. I am speaking this sentence, or earlier whatever I have given example by me. But here, for this purpose speaking a sentence, I used so many things, or I am using verb, and that verb in different form, different first form, second form, third. In present tense, I read a book, मैं एक बुक पढ़ता हूँ. In same, I will read a book, मैं एक बुक पढ़ूंगा. I am reading a book, I read a book, मैंने बुक पढ़ा. Read, read, reading. There are three types of form of verb here. So this form for speaking English or sentence and expressing our ideas and thoughts, we use different types of forms of verb, and these forms of verb thou used, they give different sense and apply different form. यानी जब हम वर्ब अलग अलग बोल रहे हैं, वह वर्ब मीनिंग कुछ और दे रहा है, और उस टेंस का यूज कुछ और है, तो वह जो है दैट इज द टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार. हैव इज द सिंबल ऑफ परफेक्ट टेंस, बट हियर हैव इज सिंबलाइजिंग प्रेजेंट टेंस. आई हैव अ कार, पोसेशन. I want to buy a computer. I want, मैं चाहता हूं. You can say I will buy a computer. I am planning to buy a computer. But I want to buy a computer, I am planning to buy a computer. Both are in present tense, but form in tense. But sense is that in future you are going to buy a computer. Future planning, future tense, future sense. So sense of sentence, that is अर्थ भाव of sentence, is the time, and whatever in which shape, form, present tense, future tense you are using, saying, this is the form, that is रूप. sense means time होता है, टेंस मीन्स फॉर्म होता है, रूप, शेप, जो सामने दिख रहा है. एक व्यक्ति होता है, वह सामने प्रेम से बोल रहा होता है, लविंगली, लेकिन अंदर से आप पे गुस्सा भी होता है, अंदर से नफरत होती है. ऐसा लगता है देखने से आपको कि नहीं वो मुझसे नफरत है. प्यार से अच्छी कोई कहता है कि अरे तुम तो स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, यू आर इंटेलिजेंट. कहता तो है कि बहुत समझदार है, लेकिन सेंस कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं ये तो कमेंट कर रहा है, मैं उतना इंटेलिजेंट हूं नहीं, लेकिन कमेंट कर रहा है. तो वह जो कह रहा है कि यू आर एन इंटेलिजेंट, दिस इज द टेंस फॉर्म ऑफ सेंटेंस. उसके बाद का सेंटेंस का, वाक्य का यह रूप है. और सेंस जो मीनिंग है वह यह है कि नहीं तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, कहीं ना कहीं वो एडवर्सली कमेंट कर रहा है. दिस इज द टाइम एंड टेंस. आफ्टर दैट, सो व्हाट इज टाइम एंड व्हाट इज टेंस? टाइम इज द सेंस ऑफ द सेंटेंस, बट tense is the form of your communication, your speaking your language. Second thing, time becomes universal for each and everywhere. समय जो है हर जगह सार्वभौमिक है, एक समान है, कभी बदलता नहीं है. It never goes change. But tense changes according to language, according to area, according to locality, region. जैसे भाषा बदलेगी, ग्रामर बदलेगा, आपका टेंस, सेंटेंस का टेंस यानी फॉर्म, ग्रामेटिकल यूज जो है डिफरेंट होता है. आपकी लैंग्वेज जैसे जैसे चेंज होगी, ग्रामेटिकल चेंज होता जाता है यूज, बट सेंस और भाव जो है वह सेम रहता है. व्हाट इज टाइम? टाइम गिव्स द की नोट of the statement sentence,
but tense expresses only form of the sentence. So in which form you can express your communication, your dialogue, your speech, your sentence, that is the form tense. And these tense become three types: present, past, future. Means we are talking in future but may give sense of present. We are talking in present tense but can give sense of future tense. This is the sense. In past, we are talking in past tense but we are giving the sense of future. For example, I had decided that I would go. We can't say I had decided that I will go. Sentence will wrong. But we can say I had decided that I would go. मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा. पास्ट में बोल रहे हैं लेकिन फ्यूचर का सेंस दे रहे हैं. So this is the tense. And each and every verb has different type of forms for different sentences: present, past, future. So the definition of tense. Tense gives three sense. First, the time segment, means in which time action is being done. Second, up to what extent प्रोग्रेस इज ऑफ एक्शन, मीन्स एक्शन जो वर्ब हो रही है वो किस हद तक प्रोग्रेस हुआ है. वेदर इट हैज कंप्लीटेड, दैट इज इन परफेक्ट टेंस. वेदर इट हैज टोटली कंप्लीटेड, देन इन अर्लियर टाइम, पास्ट टेंस. आर it will be completed in future, then future time. Remain to complete, that is in future tense. And also past, future, these four time and degree of completeness of action, these four types are expressed by a verb. So tense can be divided into three parts: present, past, future. First, you can present, past, future. And your present, past, future, all these three tense can be divided into four time segment: present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. In same way, past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous. In same way, future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect continuous. These are the time segment. Thus your sentence can be divided into two parts: time, that is अर्थ, sense, meaning, भाव, and tense. Tense can be divided into three: present, past, future. And this present, past, future can be divided into four part: simple or indefinite, continuous or progressive or imperfect, after that perfect tense, and finally perfect continuous tense. This is the definition of tense. Explanation, description of tense. But how tenses are used, how present indefinite is used, how present tense is used, how present indefinite is used, how perfect is used, perfect continuous is used, how past is used, past perfect is used, past perfect continuous is used, all these will be divided in explain into next video part. Present tense in part 2 video of tense, past tense in part 3 of this video, tense part 3 video, and future tense part 4th video. And one thing more, what is present tense? How can you recognize that we are speaking in present tense? Actually, we use present tense for that time segment in which we happen to be. जब हम during our statement, जब हम statement बोल रहे हैं उस समय की बात हम करते हैं, उस टाइम समय में होते हैं, और उसके लिए हम एक्सप्रेशन के लिए जो टेंस यूज करते हैं वो प्रेजेंट टेंस होता है, और वर्तमान में हम उस टाइम में होते हैं. व्हाट इज पास्ट टेंस? Past tense refers to the time segment of that we have lived in and that has elapsed forever.
मीन्स प्रेजेंट में है कि हम इस टाइम में हैं और इस टाइम में बोल रहे हैं, उस जिस टाइम में बोल रहे होते हैं उसी समय उस समय में हम होते हैं, यानी सिमल्टेनियसली वर्क एंड हमारा एक्सिस्टेंस दोनों। पास्ट टेंस क्या होता है कि हम उस टाइम से गुजर चुके हैं और वह टाइम जो है हमेशा के लिए जा चुका है। दैट टाइम हैज इलैप्स्ड आर पास्ट फॉरएवर दैट विल नेवर रिटर्न बैक। एंड फ्यूचर टेंस व्हाट इज, वी यूज फ्यूचर टेंस फॉर टू शो द टाइम सेगमेंट इन विच वी आर येट टू बी। हम उस समय क्षण के लिए यूज करते हैं फ्यूचर टेंस जिसमें हमें अभी होना होता है, अभी हुए नहीं है, वी आर प्लानिंग टू गो इन दैट टाइम सेगमेंट। दिस इज द फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। नाउ use of all these tenses will be in video part 10 part 1 2 3 1 is here 2 3 4. Thank you.